नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को श्रीमद्भागवत महापुराण को। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर को वाङ्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद को पाठ सदा झैँ चलिरहेको छ, नित्य चलिरहेको छ यो पाठ। र आज षष्ठ स्कंदको 8 अध्याय जसलाई नारायण कवच भनिन्छ, नारायण कवचको पाठ। हुन त पहिले पनि यो पाठ भइसकेको छ, तर पनि यहाँ कतिजनाको आग्रह भएको छ यो नारायण कवचको पाठ हजुरले श्रवण गराइदिएदेखि हामी धन्य हुने थियौँ भन्ने कतिपयको चाहिँ यस्तो विचार आएको हुँदाखेरि पाठ आरम्भ गरिएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथाष्टमोऽध्याय। राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सबाहन् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवन्स्तन्ममाख्यायि वर्मनारायणात्मकं यथा तथा इनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृते। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितः त्वष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्मः तदेकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच दौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतसङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां भाग्यतः शुचिः। नारायणमयं वर्म सन्नहेद्वया आगते पादयोर्जानुनोरुर्वरुदरेरित्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपरेमथाभिवा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवर्मध्ये णकारं शिखयादिशेत्। बेकारं नेत्रयोर्युञ्जन्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फणन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत्। ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् तदा नोष्टगुणोष्टबाहुः। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावटु वामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः। दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभु पायन् नृसिंहो सुरयूथपारिः। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतन् सगर्भः। रक्षत्सौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदन्त्रयोन्नीतधरो वराः। रामोद्रिकूटे स्वतभिप्रवासे स लक्ष्मणो व्याधभरताग्रजोऽस्मन्। मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरः साहसात्। दत्तस्त्वयोगा तथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्। सनत्कुमारो वतु कामदेवात् धय शीर्षा मां पतिदेवहेलनात्। देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात्। धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद् भयादृषभो निर्जितात्मा। यज्ञस्य लोकादवताज्जनन्तात् बलो गणात् क्रोधवशात् दहीन्द्रः। द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तुपाखण्डगणात् प्रमादात्। कल्किः कले कालमलात् प्रपातो धर्मावनायोर्कृतावतार। मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गममात्तवेणुः। नारायण प्राणोदात्त शक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः। देवोपराण्ये मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो माम्। दोषे ऋषिकेश उत्तर्धरात्रे निशीथ एको वतु पद्मनाभः। श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोषिधरो जनार्दन। दामोदरो व्याधनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः। चक्रं युगन्तानलतिग्मनेमि भ्रमत् समन्तात् भगवत् प्रयुक्तं। दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिशैनमासु कक्ष्यं यथा वातसकोतासः। गदेश निस्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडी निष्पिंड्यजित प्रियासी।
कूष्माण्डवैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहान् चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु दान प्रमथ प्रेतमात्रे पिशाच विप्रग्रघोरदृष्टीन् धरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीम सोनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्यमीश प्रयुक्तो मम छिन्दि छिन्दि चक्षुंसि चर्मन् शतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्येव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽम्होभ्य एव वा सर्वाणि एतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो वसन्दो मयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृश्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसत्सयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु न समुपद्रवः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुर्दमदः समन्ता दन्तर्भैर्भगवान् नरसिंह प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा समस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं बीजेशेषञ्जसायेन दंसितो सुरयूथवान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदावा संस्पृशे सद्यः साध्वसात् स्वभिमुच्यते न कुतश्चिद्वयं तस्य विद्यं धारयतो भवेत् राजदस्युग्रादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यः सकरिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जौ समृधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा य उचित्ररथः स्त्रीभिर्भृतो यत्र द्विजक्षय गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्शिरः सवालखिल्य वचनादस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य सरस्वत्यां स्नात्वा धाम समन्नगात् श्रीशुक उवाच यैदं शृणुयात् काले योधारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपात् शतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदेश्वरान् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपात् शतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदेश्वरान् हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। भक्तवत्सल भगवान को, श्रीकृष्णचन्द्र भगवान को, लक्ष्मीनारायण भगवान को, भक्तौर भगवान को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवान को, आज को आनंद को। जय जय श्री राधे श्रीमन्नारायण।